अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक है और जिस सब्जेक्ट की हम बात करेंगे वो है फिफ्थ सेमेस्टर में सब्जेक्ट है माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। और माइकोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो टॉपिक हमारा वो है जनरलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई। We have discussed the general properties, the vegetative properties, vegetative structure of fungi। इसके अलावा जो न्यूट्रिशन है fungi के अंदर वो हमने डिस्कस किया। आज जो टॉपिक हमारा है वो है रिप्रोडक्शन। जनरल कैरेक्टरिस्टिक में, जनरलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में हम रिप्रोडक्शन इन fungi वो डिस्कस कर रहे हैं। तो as you know that reproduction, what is reproduction? Reproduction means कि एक ऑर्गेनिज्म क्या करे, अपनी ही तरह के नए ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करे टू मेंटेन इट्स रेस, अपनी नस्ल को बरकरार रखने के लिए। सो जस्ट लाइक अदर ऑर्गेनिज्म फंजाई भी रिप्रोडक्शन ये एक बुनियादी प्रॉपर्टी है तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो एसेक्सुअली भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट रिप्रोड्यूसेस बाय 3 ways, 3 तरीकों से, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन और स्पोर। ये शायद इससे पहले हमने डिस्कस किए थे। बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन। बर्डिंग मींस कि व्हेन द पेरेंट सेल, द पेरेंट हाइफी डेवलप्स, प्रोड्यूस एन आउटग्रोथ, छोटा सा आउटग्रोथ प्रोड्यूस करता है। दिस आउटग्रोथ ग्रोज या इट एनलार्जेस विद टाइम, और एक टाइम आता है कि इट डिटैचेस फ्रॉम द पेरेंट सेल or parent hyphae and it develops into another hyphae। तो इस रिप्रोडक्शन को, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बर्डिंग कहते हैं। हाइफी हमने वेजिटेटिव जो स्ट्रक्चर है उसमें डिस्कस किया था। फंजाई ये हाइफी क्या है, माइसीलियम का है, और इसके अलावा थैलस, ये तमाम चीज़ें उधर हमने डिस्कस की थी। फ्रेगमेंटेशन जिसमें पेरेंट हाइफी फ्रेगमेंट में या पेरेंट माइसीलियम फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाता है, और each fragment develops into another organism, another new hyphae. This is called as fragmentation. Third one is spore, which is very common, most common way of reproduction in fungi. Spores है क्या? What is spores? So spores are just like the gametes, जिस तरह gametes होते हैं, but gametes are sexual reproductive cells. Spores are what? Spores are a sexual reproductive cell, and they are special adaptation to land environment. They are produced as an adaptation to land environment by the land organism like plants, like fungi। तो fungi और plants इन दोनों में ये spores produce होते हैं। Spores क्या है? Asexual reproductive cells है, इससे asexual reproduction होती है, that is produced as a special adaptation to land environment। Now spores may be produced by 3 ways। स्पोर 3 तरीकों से प्रोड्यूस होते हैं। दे में बी डायरेक्टली प्रोड्यूस्ड ऑन हाइफी। डायरेक्टली किस तरह प्रोड्यूस होते हैं कि लेट्स सपोज दिस इज हाइफी एंड दिस इज द टिप ऑफ हाइफी। ये टिप है, ये टिप इनलार्ज होती है, बड़ी होती है, और इसमें प्रोटोप्लाज्म ट्रांसफर हो जाता है, न्यूक्लियस ट्रांसफर हो जाता है, एंड एट लास्ट इट डेवलप्स इनटू, इट डिटैचेस एंड डेवलप्स इनटू स्पोर। और स्पोर जब रिलीज हो जाए वो जर्मिनेशन के बाद एक न्यू हाइफी में डेवलप हो जाता है। मोस्ट कॉमनली स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजिया। तो स्पोरेंजिया दे आर व्हाट? दे आर अगेन मॉडिफिकेशन ऑफ द हाइफी। दे आर स्पेशल मॉडिफिकेशन, हाइफी की स्पेशल मॉडिफिकेशन है। इस स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, एंड व्हेन दीस स्पोर्स दे आर रिलीज्ड दे जर्मिनेट इनटू अनदर हाइफी। थर्ड वे इज एक्चुअली इन फ्रूटिंग बॉडी। In fungi there are specialized structures जिसमें spores produce होते हैं। These structure they are called as fruiting bodies। Again अगर हम fruiting bodies और sporangia की तरफ आए, first of all यहाँ पे हमने डिस्कस किया sporangia। हाइफी तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह हाइफी के टिप पे प्रोड्यूस होते हैं। sporangia, now sporangia or sporangium is supported by an upright structure called sporangiopore। This is the structure of sporangia। स्पोरेंजिया के अंदर माइटोसिस हो जाती है, माइटोसिस के जरिए से स्पोर्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, और यही स्पोर्स व्हेन दे आर रिलीज, जब ये रिलीज हो जाए, फॉर एग्जांपल ये जो
sporangium है ये it ruptures, spores are released and spores again germinate into another hyphae. This sporangium is supported by an upright structure called sporangiophore. The third one is actually fruiting bodies. Fruiting bodies are of three different types. Lekin again fruiting body is what? This is again modification. This is modification of what? Hyphae. Hyphae की modification है. There are three different types of fruiting body. Ascus, and each fruiting body is characteristic of particular group of fungi. For example, ascus. Ascus means sac. So spores जो है, they are produced in a sac-like structure. Ascus. Fruiting body is called as ascocarp. These are produced in ascomycota. Basidia is actually a club-shaped structure. Club-shaped structure. That's why these group of fungi they are called as club fungi. और जो fruiting body होती है उसको basidiocarp कहते हैं. Third one is actually sporangia, which is produced in zygomycota. Now, if we look into the structure of our fruiting body, first of all, this is ascocarp. इस fruiting body को हम ascocarp कहते हैं. ये जो sac है, इस sac को हम कहते हैं ascus. Ascus means sac, bag-like. और इसके अंदर जो spores produce होते हैं, these spores they are called as ascospore. और ये जो spores है, ये ascomycota group of fungi की characteristic spores है. Second one is actually basidiocarp. Basidiocarp is fruiting body. ये fruiting body होती है. अगर आपने mushrooms देखे हुए हैं, typical agaricus जो mushrooms हैं या Agaricaceae family से ताल्लुक रखने वाले mushrooms एक particular group of fungi है, उसका नाम है. सही है, जिसमें मुख्तलिफ different species included है. मशरूम सिर्फ वाइट वाला मशरूम उसको नहीं कहते, बल्कि इसमें बहुत सारे मशरूम्स, जिस तरह उस दिन मैंने आपको दिखाया, तो वो भी एगरिकेसी फैमिली से ताल्लुक रखने वाला, आल्दो वो एडिबल फंजाई नहीं था. अच्छा, इसके गिल्स के अंदर ये आपको गिल्स अगर आप देखें, इसको जूम करें, तो दीज आर बेसिडियास के अंदर एक्चुअली माइटोसिस हो जाती है, स्पोर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं. These spores they are called as basidiospores. इन स्पोर्स को हम basidiospores कहते हैं. These structure they are called as basidia, club shape, or they are called as basidiocarp. Together with spores के साथ फिर इसको हम basidiocarp कहते हैं. Sporangia. Now sporangia they are again specialized asexual reproductive cells. Sporangia is actually specialized characteristic structure in which the spores are produced. This is the shape of sporangia, और ये नीचे sporangium, इस तरह वहाँ पे हमने डिस्कस किया. The second way of reproduction is actually sexual reproduction. Now, जिस तरह animals में है या plants में है, वहाँ पे reproductive structures उनकी differentiation होती है. इसके अलावा reproductive cells की differentiation होती है based on their nature and based on what? Based on their structure, their physical structure. For example, अगर हम animals में बात करें, so sperms are mostly motile in nature. सही ना? Sperms are mostly motile in nature. Egg is actually non-motile in nature. इसके अलावा size के लिहाज से sperm is actually what? Smaller in size. Egg or ovum is larger in size. So based on nature and physical property, we can differentiate sperm and egg from each other, but there is no differentiation of gametes. Fungi only reproduce sexually when the conditions are favorable. Generally fungi reproduce asexually. General reproduction asexually होती है. There is no differentiation of male and female gametes. ये differentiation नहीं होती. How this reproduction occurs? So first of all, these are hyphae of the fungi. So first union of hyphae unite हो जाते हैं. There is protoplasmic exchange हो जाता है, जिसको हम प्लाज्मोगेमी कहते हैं. और प्लाज्मोगेमी के बाद ये देखिए, you can see the nuclei from each hyphae, they come close together, and in the third step the nuclei combine together to form two in zygote. This process is called as karyogamy. Zygote बन जाता है. इस तरीके से ये sexual reproduction complete हो जाती है.
So this was about sexual reproduction. Karyogamy or plasmogamy, again these are two different phases of another process जो कि synonym है बिल्कुल उसकी तरह fertilization की तरह, fertilization की तरह process, उसको हम syngamy कहते हैं। तो syngamy है असल में। syngamy क्या है? ये भी sexual reproduction जिसमें वो ऑर्गेनिज्म में जिसमें there is no differentiation of gametes की differentiation नहीं है। This was about fungi, और fungi के अंदर हमने जो reproduction है डिस्कस किया। Again, if you have any question, आपको कोई question हो, you can ask, you can put your